welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने किया डिटेन? अपने ट्राइमेस्टर को एंजॉय कर रही सोनम कपूर को क्यों ट्रोलर्स ने किया टारगेट? किस तरह हरलीन सेठी ने लिया इनडायरेक्ट डिग एट एक्स बॉयफ्रेंड विकी कौशल? सिद्धांत कपूर पर लगा बैन सब्सटेंसेस कंज्यूम करने का आरोप. शक्ति कपूर ने कहा इट्स नॉट पॉसिबल. श्रद्धा कपूर पर भी बैन सब्सटेंसेस कंज्यूम करने के आरोप लगे थे. सिद्धांत कपूर को बैन सब्सटेंसेस केस में पुलिस ने किया डिटेन. रिसेंटली एक रेव में पहुंचे सिद्धांत कपूर के टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के बाद पुलिस ने किया उन्हें अरेस्ट. हालांकि इस मामले में जब सिद्धांत कपूर के पापा और बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर से बात करने की कोशिश की गई तो पहले तो उन्होंने कॉल्स नहीं पिक की, लेकिन फिर वेटरन एक्टर शक्ति कपूर ने इस पर बात करते हुए सिर्फ इतना कहा, आई कैन से ओनली वन थिंग, इट्स नॉट पॉसिबल. आगे शक्ति कपूर ने कहा, आई एम इन मुंबई एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. आई गॉट टू नो फ्रॉम न्यूज चैनल्स ओनली. All I know as of now is there is no arrest and Siddhant has only been detained. जब शक्ति कपूर से उनके बेटे के काम के बारे में पूछा गया, he said, yes, he is a DJ, disco jockey, and he plays at parties, and that's what he was in Bengaluru for. I don't know where are all these reports coming from. आपको बता दें, संडे नाइट को बेंगलुरु के एक होटल में चल रही रेव पार्टी में जब पुलिस ने रेड की थी तो सिद्धांत कपूर was found allegedly consuming drugs. बेंगलुरु पुलिस ने इसे कंफर्म करते हुए बताया कि जिन 6 लोगों के सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे गए थे उसमें सिद्धांत कपूर का भी सैंपल था जो पॉजिटिव आया है. वहां के डीसीपी ने इस पर बात करते हुए एक न्यूज एजेंसी को बताया, Siddhanth Kapoor has tested positive for drugs. He has been brought to Ulsur police station. हालांकि the cops are reportedly yet to confirm if those involved had already consumed banned substances and arrived at the party or if they had consumed the banned substances at the hotel. वैसे in 2020, the Narcotics Control Bureau had called Shraddha Kapoor for questioning in a banned substance case that had emerged during the investigation into Sushant Singh Rajput's death case. रिपोर्टेडली श्रद्धा कपूर ने कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे की सक्सेस पार्टी में शामिल थी, लेकिन उन्होंने बैन सब्सटेंस कंज्यूम करने की सभी रिपोर्ट्स को डिनाई कर दिया था. अब श्रद्धा कपूर के भाई पर इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं. सिद्धांत कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो ही हैज वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन फिल्म्स लाइक भागम भाग, चुप चुप के एंड भूल भुलैया, while he has featured in Bollywood movies like जज्बा, हसीना पारकर एंड चेहरे. विकी कौशल ने फैंस के साथ शेयर की अपनी एक हॉट तस्वीर. क्या हरलीन सेठी का ये पोस्ट उनके एक्स विकी कौशल के लिए है? कटरीना कैफ और विकी कौशल के बीच कोई नहीं आ सकता. विकी कौशल का दिखा ब्राउन मुंडा अवतार. हैंडसम विकी कौशल ने अपनी एक न्यू पिक्चर के थ्रू किया अपने फैंस को ट्रीट. विकी कौशल इन दिनों क्रोएशिया में फराह खान के साथ कर रहे हैं शूट. ऐसे में वहां से उन्होंने एक बार फिर अपनी एक लेटेस्ट पिक्चर अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट की है, जिसमें ही इज सीन फ्लॉन्टिंग हिज बियर्डेड लुक एंड उबर कूल हेयर कट. अपनी इस लेटेस्ट फोटो में विकी कौशल व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट ग्लासेस में दिख रहे हैं. इसे कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, ब्राउन मुंडा एट किंग्स लैंडिंग. विकी कौशल के इस स्टाइल से फैंस पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुके हैं. साथ ही करण जौहर ने भी उनके गुड लुक्स पर रिएक्ट करते हुए रेड हॉट इमोजीज और फायर इमोजीज ड्रॉप किए हैं.
अब एक तरफ विकी कौशल इंटरनेट पर अपने इस हॉट अंदाज से कहर गिरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकी कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड हरलीन सेठी अपने एक रीसेंट पोस्ट की वजह से नेटिजन्स की नजरों में आ गई हैं। दरअसल हरलीन सेठी ने रिसेंटली अपनी कुछ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, in which she took a dig at her ex-boyfriend. She wrote in the caption, "'Cause roads have more depth than my boyfriends ever did." बस फिर क्या था, हरलीन सेठी के इस क्रिप्टिक पोस्ट पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक नेटिजन ने जहां लिखा, "He dated his now wife for a longer period than he dated you. He is now married, going on a year, and makes no innuendos about you. You, however, are still obsessed. Move on." Another one said, "Savage but honest, as always." बता दें 2019 में अलग होने से पहले हरलीन सेठी और विकी कौशल एक दूसरे को डेट कर रहे थे और दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ओपन थे। खैर, अब विकी कौशल की शादी कटरीना कैफ से हो चुकी है और दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। यही नहीं, कोई भी तीसरा इस कपल के बीच नहीं आ सकता, फिर चाहे वो फराह खान ही क्यों ना हो। देखिए अपने एक पोस्ट में जब रिसेंटली कटरीना कैफ को टैग करते हुए फराह खान ने अपनी और विकी कौशल की पिक्चर पोस्ट की थी, where she wrote, "Sorry at Katrina Kaif, he's found someone else." At Vicky Kaushal, #Croatia. Replying to Farah Khan, Katrina Kaif shared the same pic and wrote, "You're allowed" at Farah Khan Kundrra. She even added the song "Kuch To Hua Hai" from Kal Ho Na Ho to the Instagram story. Vicky Kaushal too added to the conversation and wrote, "We are just good friends." ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि कटरीना कैफ और विकी कौशल की बॉन्डिंग कितनी मजबूत है। सोनम कपूर को ट्यूब टॉप में बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए किया गया ट्रोल। नेटिजन्स ने कहा, रियाना को कॉपी कर रही हैं सोनम कपूर। सोनम कपूर का प्रेगनेंसी फैशन स्टाइल नहीं आया सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद। सोनम कपूर को किया गया सोशल मीडिया पर ब्रूटली ट्रोल और इसकी वजह है उनका ये प्रेगनेंसी स्टाइल। दरअसल सोनम कपूर की सिस्टर रिया कपूर ने सोशल मीडिया पर ये पिक्चर शेयर की, in which सोनम कपूर can be seen flaunting her baby bump in a tube top. इस पिक्चर को शेयर करते हुए रिया कपूर wrote, "Rock up to the best meal of the trip like so far." लेकिन सोनम कपूर का ये स्टाइल किसी को पसंद नहीं आया और उन पर रियाना का स्टाइल कॉपी करने का आरोप भी लगा। सोनम कपूर को ट्रोल करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "It's been a while as a trend in the West. Bollywood is following it now. Flaunting a preg bump is that good feeling for going to be mothers." The second person commented, "Neha Dhupia telling me in my mind, it's her choice." वहीं थर्ड पर्सन ने कमेंट किया, "She doesn't want her baby to be an Indian citizen. Why even Indians spend their hard-earned money to watch her on screen?" The fourth troll compared her with Rihanna and wrote, "Wanna be Rihanna. कॉपी करके ही जिंदगी निकल गई इन बॉलीवुड वालों की." The fifth one commented, "Rihanna trend बकवास. A woman looks beautiful with her clothes on in pregnancy." वहीं रिसेंटली सोनम कपूर के बर्थडे पर अनिल कपूर ने सोनम कपूर को बर्थडे विश करते हुए दिया लेसन ऑफ पेरेंटहुड। He wrote, "Dear at Sonam Kapoor, if there's anything that makes up for not being able to celebrate your birthday with you this year, it's the anticipation that the next time we see you, we'll be that much closer to holding our grandchild in our arms. Parenthood is a seesaw between being happy for your children as they create their own lives and being sad that they're not always around you anymore. You'll see for yourself soon enough. Happy birthday, my darling girl. We can't wait to see you, Anand, and our little prince, Sess, soon." हालांकि इससे पहले भी कई बार सोनम कपूर का प्रेगनेंसी स्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और उनके स्टाइल को कई बार पसंद भी किया गया, लेकिन इससे पहले भी उन पर रियाना की स्टाइल को कॉपी करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि सोनम कपूर फिलहाल लंदन में हैं और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं। उर्फी जावेद ने अपना डांस वीडियो शेयर किया है जिसमें वो क्लासिक हिंदी सॉन्ग ओ हसीना जुल्फों वाली पर ग्रूव करती दिख रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उर्फी जावेद ने लिखा, "Not a dancer, just thought the dress looked good with this song."
इन दिनों इंटरनेट पर नॉर्वे के एक डांस क्रू का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सभी एक वेडिंग में पॉपुलर बॉलीवुड सॉन्ग पर ग्रूव कर रहे हैं। इनमें पार्टी ट्रैक काला चश्मा भी शामिल है। इन द वीडियो, a group of dancers and movement directors from a troupe named Quick Style are seen dancing on the fun number. The group put up a high-octane performance replete with animated expressions and sleek movements. करण, वो तेजा में क्या है जो मुझ में नहीं है? कुछ नहीं है ना? Are you serious? नहीं, मैम मैं जो पूछ रहा था आपको कि शादी की डेट कैसे निकालते हैं मेरी और तेजा की, उसके बारे में आप कुछ बता रही थी ना मेरे को। आप बता रही थी मैं शादी की डेट पूछ रहा था मैम। क्या करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश शादी करने जा रहे हैं? रिसेंटली एक वीडियो में करण कुंद्रा फराह खान के साथ अपनी वेडिंग डेट डिस्कस करते हुए दिखे। दरअसल करण कुंद्रा इज अ पार्ट ऑफ द खतरा खतरा शो अलोंग विद तेजस्वी प्रकाश एंड फराह खान। उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत का नाम एक बार फिर साथ सुनने में आया। रिसेंटली उर्वशी रौतेला एक कॉलेज फेस्ट में गई थी, जहां उर्वशी रौतेला वाज ग्रीटेड बाय ऋषभ पंत चैंट्स बाय द क्राउड। बता दें, बैक इन 2018 उर्वशी रौतेला एंड ऋषभ पंत had sparked dating rumors when they were snapped together on various occasions. The actress was also spotted cheering for Rishabh Pant from the stands during IPL matches. But before they could make their relationship public, things turned awry between the two and they decided to part ways. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के फैंस अब तक उनकी मौत के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। Recently, his fans in the United States paid a heartwarming tribute to him by gathering at New York City's iconic Times Square to remember him. इसके कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, where the late singer's songs were played on the big screen at Times Square outside the Nasdaq market site office, while fans sang along. वहीं साउथ कोरियन इन्फ्लुएंसर ने अपने तरीके से दिया सिद्धू मूसेवाला को ट्रिब्यूट on his birthday. Coming up on the show, नुसरत भारूचा और सोशल टैबू पर आधारित जनहित में जारी की कास्ट और टीम ने किया जूम से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today I have with me the dynamic duo from Janhit Mein Jaari. Please join me in welcoming Nushrratt Bharuccha and Anut Singh Dhaka. Hello, hello, hello. Hey. How are you doing? Doing good. Very doing happy great. and very energetic and very loud. We're not screaming for any reason. We just really like talking loudly. Yes. Nushrratt, the tagline of this movie is "एक वुमनिया सब पे भारी, ये सूचना है जनहित में जारी." Personally, for you as a leading actress in this industry, how much do you identify with the starting part of "एक वुमनिया सब पे भारी"? अरे सही क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत सही है, बस मुझे समझ नहीं आता इसका जवाब मैं शुरू कहाँ से करूँ। फ्रॉम बीइंग द जोक ऑफ आई डोंट नो हाउ मेनी फिल्म्स नाउ where I would go on set knowing a comeback of this, but I can't give the comeback because it's not written like that. I have to be the dumb girlfriend and I have to be the annoying girlfriend, and the boyfriend has to be the smarter one and has to be the one that cracks the wisecrack, and I have to just stand there and take it. So, I mean, I've come only from that feeling. I mean, I remember till SKTKS when I was doing interviews, they asked me, आप इस फिल्म से क्या चाहते हो, कि क्या आपके लिए हो? तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ लोग मेरा नाम जान ले, Right. because उसके पहले तक whichever red carpet I went to, whichever award, any public place I went to, they would call me as the Panchnama girl. But there were 3 girls in Panchnama. Yeah. They knew all the boys' names by heart. By heart, yeah. They just didn't know each girl by their name, and I felt that 2 पिक्चरें हिट होने के बाद भी अगर मेरा नाम नहीं जानते लोग, तो मैं किस पे भारी पड़ूँ? क्या आप बोल रहे हो? So I have to come only from grounding where in the films the women are not given the importance, in the characters they were not given. They were supposed to be that setup, which is correct for that film, which is fine. So I've come from that to be able to then headline, I think, an Ajeeb Dastan or a Chori, and now this. These films have come my way. I don't know how and what, but the directors, makers, writers of these films came to me with this film. So, and I don't think till these films came out, anybody saw me any differently. Right. I still played the hot The girl supporting or next the- door, yeah. the love interest, the girls whose songs are very popular, so cast her for songs. I've had a producer and a film director who said, आपके गाने हिट है, हमारी पिक्चर में 4 गाने, आपको 4 हिट गाने मिलेंगे.
मैंने कहा उन गानों का मैं करूँ क्या? सजा के रखो। मेरा थोड़ी लेबल है कि उससे मोनेटाइजेशन करके मेरे को रॉयल्टी मिलेगी। मैंने कहा मैं इसका करूँ क्या? So it's very funny, but just when I didn't have the power, that same industry gave me the power. So it's not like I went out and did anything. Sweet revenge. It just came and it's here, and I'm doing And what with I. great power comes. Great responsibility. We've seen it in I don't know how many And Marvel Womania films. becomes bhari sab pe. And also growing up, like, did you have any woman actress in the industry that you looked up at and thought that ye womania industry pe bhari hai? Like someone that you really like kind of looked up to? I think I've had a series of favorites, and they've stayed favorites for a while. From Smita Patil ji to Shabana ma'am to Kajol to Alia now to Anushka, just people who have done things that, I mean, you know, they didn't think much of them before, Right. and then they just came Exploded on the scene, yeah. completely and Yeah. became so much more than just an actress. Like, you know, they just became so much more. I feel like those are inspirations, and not just inspirations, those kind of give you a sense of feeling that it's fine, you know, there is a long way to go and there's Yeah. a lot to achieve. And ये जो 4 लोग अभी इस कमरे में वो नहीं होने वाले हैं, so it's fine. Anuj, Ji. February this year, you gave an interview where you said some hectic things. Let me just refresh your memory. Please. February में I gave an interview. I consider each project as my debut venture, and it's true for every outsider in the industry. And we can't afford to go wrong. We don't have the liberty to make mistakes until destiny works out. तारीफ सब करते हैं, पर काम बहुत मुश्किल से मिलता है. जी. या आया याद? हाँ. Has anything about this sentiment for you changed at all since then? Now that you're on the cusp of having your male lead? No. Elaborate. In year 2019, an article was written, is the discovery of the year 2019. In 2020, another article was written which said he's the find of 2020. So, हर साल मुझे ढूंढ रहे हो, मेरे साथ कर क्या रहे हो? In 2019, when Taj Mahal 1980, कुछ करो तो. In 2019, when Taj Mahal 1918 came out on Netflix, everybody who's and who of the industry, they tweeted about me. I'm at a stage where I have zero pull in the industry, in media or with people. I don't know anybody. Right. So they were gracious enough, kind enough to find out who I was and tweet about me. Sure. But none of them offered me any work, despite being the influential people that they are. Right. 14th February, my show was released. 15th, I was in Aramnagar Part 2 again, scouting for work and scouting for auditions. And that is the reality. Right. No wonder it's an artistic industry, but it still runs on business. So I know for a fact the minute there are very few producers like Mr. Raj Chandelier and Mr. Vinod Bhanushali and it's a once in a lifetime opportunity for me as well. But there are very few people like them who operate for the art, who will take the liberty or will have the courage to find the artist or the right actor And for gamble it. on somebody. And gamble Yeah. on somebody because their money rides on it, right? So the minute I become a profitable, the minute there Bankable is actor. return, the minute there is Yeah. a return on their investment, I become I become somebody who would they, cast with and be like, we've been following your work for past 5 years, 4 saal se tum ho, ye ho, wo. Nobody knows how I've survived. Yeah. I have done work in the industry for mere exposure. Exposure does not pay your bills. Exposure does not pay for your food. It does not put a roof over your head. Yeah. It does not, there are more needs in life than exposure. But having said that, no, I still stand by what I've said. Yeah. And we speak right now, 10 days to the release. I still don't know where my next paycheck or what my next line of body of work will be. But yeah, so far so good. Itna kuch hua hai, I think this is also bonus. When I came into this industry, I was somewhere prepared कि भाई, are you sure you want to be an actor? अगर जिंदगी भर काम नहीं मिला, so I told myself जिंदगी भर audition मिलते रहना, मैं उसमें भी खुश रहूँगा. That's a nice So, But he's right. LSD came out. Yeah. We suddenly 6 of us was run after, sought after by everybody in the media, and I have met directors that you can only dream of meeting. Yeah. Who've actually sat and told me how good they thought I was in this scene, that scene, this look, and I'm like, wow. I mean, I watch their films. And I look up to their work, and they've seen my film, like how, and they've seen me. And I really thought
that now there's no looking back in life. I've made it. Yeah. I've made it. Yeah. None of them have worked with me from 2010 to now. None. Yeah. And it's not like it's been 1 year, 2 years. Taj Mahal is what, 3 years? 2 years? It's been 10 years. So in 10 years, all those directors who saw me then and said, And raved about it. Yeah. have still not come around and done anything with me. So he's right, just learnt a simple, straight lesson. You do what you need to do when you need to do. People will be there, people will not be there. The only person that will stay in the room after it all is yourself, and that's it. I really appreciate that about both of you. You guys have had both experiences that are not ideal, but there is still positivity there, which I think is very, very important. Thank you. Well, thank you so much for joining me, guys. It's been an absolute pleasure, and I wish you all the best. for your Likewise. career. Thank you Parul. so much.